हेलो गाइस, वेलकम टू प्रेपस्टार्ट। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। हियर वी आर प्रोवाइडिंग यू विद द ओवरव्यू ऑफ द डे, जहां हम लोग डिस्कस करते हैं 10 टॉप स्टोरीज टू बूस्ट अप योर डेली प्रिपरेशन। आप लोग हमारे पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़े। सो मूविंग ऑन टू द फर्स्ट स्टोरी हियर। Rupees 1075 crore has been sanctioned for the embankment of Majuli. The 15th Finance Commission has recommended a new embankment cum road around Assam's Majuli, that is the world's largest inhabited riverine island. हमें ऑलरेडी पता है कि हमारे पूरे वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट इनहेबिटेड आइलैंड है माजुली, जो कि स्थित है आपकी असम में, एंड उसके लिए अभी फिलहाल के बजट में 1075 करोड़ रुपए सैंक्शन कर दिए गए हैं। ऑल्सो इसके साथ साथ द कमीशन हैज रिकमेंडेड रुपीज 300 crores फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कामाख्या टेम्पल कॉम्प्लेक्स। सो दिस इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर द स्टेट ऑफ असम। एंड इस बजट में असम को काफ़ी सारे अमाउंट सैंक्शन कर दिए गए हैं। ऑल्सो टी ट्राइब्स के लिए 1000 crores रुपीज़ सैंक्शन कर दिए गए हैं। ठीक है, सो स्टेट ऑफ असम, अगर हम लोग बात करें, फिलहाल के सीएम हैं सर्बानंद सोनोवाल, तो वो भी आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। मूविंग ऑन टू द सेकेंड स्टोरी हियर। इंडियाज फर्स्ट एम्प्यूटी क्लिनिक इज बीइंग लॉन्च्ड इन चंडीगढ़। दिस इज़ द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। एंड हमेशा मैं कहता हूँ कि कोई भी चीज़ जब फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड रहता है, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। The clinic was inaugurated by Professor Jagat Ram on 1st of February. It aims to improve the amputation patient care by providing a collection of services under one roof with significant coordination. PGI MER के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन अगर मैं डालूँ यहाँ पे, डायरेक्टर ऑफ कोर्स जगत राम। मोटो उन लोगों की है सर्विस टू द कम्युनिटी, केयर ऑफ द नीडी एंड रिसर्च फॉर गुड ऑफ ऑल। लोकेशन चंडीगढ़ में है एंड इट वाज फाउंडेड ऑन 1962। तो देयर वाज ऑल फॉर द सेकंड स्टोरी गाइस। मूविंग ऑन टू द थर्ड स्टोरी। आत्मनिर्भरता has been named as the Oxford Hindi word for the year 2020. The word was chosen by an advisory panel of language experts Kritika Agarwal, Poonam Nigam Sahai and Imogen Foxon. Previously अगर हम लोग देखें, Aadhaar was the word for 2017, Nari Shakti was the word for 2018 and Samvidhan was the word for 2019. Guys please, सारे के सारे वर्ड्स आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, बिकॉज एग्जाम्स में आजकल नॉट ओनली द रिसेंट एज वेल एज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, या फिर प्रीवियस ईयर करंट अफेयर्स को भी काफ़ी महत्व दिया जाता है। रिगार्डिंग यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, चांसलर हैड द लॉर्ड ऑफ पैटर्न ऑफ बर्न्स, वाइस चांसलर लुइस रिचर्डसन। लोकेशन उनकी ऑक्सफोर्डशायर, इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम में इस्टेब्लिश की गई थी 1096। Moving on to the fourth story here. Bhavya Lal, NASA's acting chief of staff. So this is related to the appointment guys. Appointments are related questions, जैसे कि हम सबको पता है, काफ़ी पूछे जाते हैं। And an Indian American scientist has been appointed as the acting chief of the staff of NASA. This is a very proud moment for us and the people of India. She has served as a member of the research staff at the Institute for Defense Analysis Science and Technology Policy Institute from 2005 to 2020. She served 2 consecutive terms on the National Oceanic and Atmospheric Administration Federal Advisory Committee on Commercial Remote Sensing. NASA, of course, NASA से रिलेटेड थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आप लोगों को ज़रूर देना चाहूँगा। यहाँ पे एक्टिंग एडमिनिस्ट्रेटर है स्टीव जुरचाई। मोटो उनकी है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। टाइप ऑफ कोर्स इट्स अ स्पेस एजेंसी। हेडक्वार्टर्स उनकी वाशिंगटन डीसी एंड इस्टेब्लिश की गई थी जुलाई की 29 तारीख 1958 को। मूविंग ऑन टू द फिफ्थ स्टोरी नाउ। नीति आयोग's मेगा सिटी प्लान फॉर द लिटिल अंडमान। नाउ नीति आयोग हैज proposed to leverage the strategic location and natural features of Little Andaman Island by building a new greenfield coastal city. It will be developed as a free trade zone and will compete with Singapore and Hong Kong.
This plan is outlined in the Sustainable Development of Little Andaman Island Vision document by the Niti Aayog. Related to Niti Aayog, of course, हम सबको पता है, फिर भी आई एम जस्ट गेटिंग यू रिवाइज. चेयरपर्सन नरेंद्र मोदी, CEO Amitabh Kant type. It's a policy think tank for the government of India. Headquarters इनकी है न्यू दिल्ली and इसे establish किया गया था 1st of January 2015 में. So that was all for the 5th story, guys. Moving on to the 6th story here. So a mummy with a gold tongue has been found in Egypt, and archaeologists have found a 2000-year-old mummy with a gold tongue in the ancient Egyptian site called Saporisis Magna. The archaeologists led by Kathleen Martinez from the Dominican Republic discovered the mummy in one of 16 burials at the Saporisis Magna, which has temples dedicated to Osiris and Isis, a goddess who was both the wife and sister of Osiris. Related to Egypt, अगर हम लोग थोड़ी बात करें, यहाँ पे प्रेसिडेंट है अब्देल फतेह अल सीसी, प्राइम मिनिस्टर मुस्तफा मदबौली, कैपिटल उनकी है कायरो, करेंसी इजिप्शियन पाउंड, एंड ऑफिशियल लैंग्वेज इज ऑफ कोर्स अरबिक. सो आई होप ये इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी, एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग देख सकते हैं, पूछा भी जा सकता है आप लोगों को. इवन द साइट name can also be asked. ठीक है. So moving on to the 7th story here. UP man unfurls national flag of India at Kilimanjaro. Mountaineer Nithyas Singh, please नाम जरूर याद रखिएगा, पूछा जरूर जाएगा, from Gorakhpur unfurled the national flag at Mount Kilimanjaro peak, the highest mountain in the African continent. Also, he scaled a height of 5,895 meters above the sea level and unfurled India's tricolor flag on 26th of January 2021. So this is of course a proud moment for India. Also, यहाँ पे बात की गई है कि he has also raised the flag for the transgender community for supporting him in his journey. उत्तर प्रदेश से रिलेटेड अगर हम लोग थोड़ी बात करें, यहाँ पे CM योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल, कैपिटल उन लोगों की है लखनऊ, एंड ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ कोर्स हिंदी. Guys, again I'm telling you, Nithyas Singh is the name of the person who has unfurled the national flag on the auspicious moment of 26th January 2021. Moving on to the 8th story. Iran launches new satellite carrying rocket. Iran's defense ministry launched a new satellite carrier with its most powerful solid fuel engine on 1st of February 2021. It was the first launch of the Joljana hybrid satellite carrier for suborbital testing. Also, यहाँ पे जो जोलजाना की अगर हम लोग बात करें, जोलजाना can put satellites in a 500 kilometer altitude orbit and carry a 220 kg payload. The rocket can be launched from a mobile platform which provides it with a special capabilities. ईरान से रिलेटेड थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पे देना चाहूँगा. सुप्रीम लीडर उनकी है अभी अली खमेनी, प्रेसिडेंट हसन रोहानी, कैपिटल तेहरान, करेंसी इरानियन रियाल, ऑफिशियल लैंग्वेज इज पर्शियन. So that was all for the 8th story. Moving on to the 9th story here. A story related to obituary. Hollywood actor Hal Holbrook passes away. Hal Holbrook, the award-winning actor who toured the world for more than 50 years as Mark Twain in one-man show, passed away in January 2021. He won 5 Emmys and Tony in his career. In 2008, he received his first Oscar nomination for playing a lonely widower who befriends young wanderer Christopher McCandless in director Sean Penn's Into the Wild. So, of course, याद ज़रूर रखिएगा name of the person, and he was born on 17th February 1925, died on 23rd January 2021. Occupation उनकी actor, director, writer, and बाकी जितने भी information दिए गए हैं सारे के सारे almost important है, but the name of course plays a vital role for your examinations. Moving on to the final showdown story of the day.
Biden appoints Dr Raj Punjabi to lead his MI. अब MI से अगर हम लोग बात करें, this is an initiative that is a malaria initiative which is mainly in African and Asian countries. He is a graduate of University of North Carolina School of Medicine, trained in internal medicine and primary care at Massachusetts General Hospital and Harvard Medical School. He has served as a faculty member at the Harvard Kennedy School also. डॉक्टर राज पंजाबी से रिलेटेड अगर हम लोग थोड़ी बात करें, यहाँ पे को फाउंडर एंड सीईओ ऑफ द लास्ट माइल हेल्थ ऑक्यूपेशन एज अ फिजिशियन, प्रोफेसर, सोशल एंटरप्रेन्योर, and Dr. Punjabi was named as one of the time 100 most influential people in the world in 2016. That was all for the day guys. I hope आज की ओवरव्यू आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा. अगर आप लोगों को ये ओवरव्यू अच्छा लगा, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा. एंड अगर आप लोग फर्स्ट टाइम हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. आप लोग हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं. सो दैट वाज ऑल फॉर द डे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे गाइस.